So guys, now let's focus on the next point from the chapter and the last point from the chapter, that is retouching tool. Retouching tool, as I told you, are of many types, like healing brush tool, spot healing tool, clone stamp tool, pattern stamp tool, eraser tool, blur tool, smudge tool, dodge tool and burn tool. So how this tool works or what is the use of these tools, instead of learning theoretically, let's focus practically on it. Okay, so retouching tool हम practically देखते हैं. First step, that is healing brush tool. Healing brush tool ना, ये first let's select the healing brush tool pattern. Here I have already taken one image over here. After taking the image, what you have to do here, see now, this one is a healing brush tool. Near brush tool there is the healing brush tool. You have to select a healing brush tool. After selecting a healing brush tool, what you have to do, by pressing alt key, you have to select a particular part of an image, like I am selecting this portion of an image. ये पोर्शन इमेज का सिलेक्ट कर रही हूँ. अब इसका मुझे क्या करना है, रेप्लिका क्रिएट करना है, जिससे आपकी स्किन होती है ना, स्किन चिक्स होते हैं ना, चिक्स दोनों साइड के चिक्स सेम नहीं होते, कहीं पे स्क्रैचेस होते हैं, कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है. तो आपको उसके अंदर क्या करना है, दोनों साइड आपके फोटो में क्लियर आने चाहिए. तो ऐसे वक्त पे यूज होता है स्पॉट हेलिंग टूल. कौन सा ब्रश टूल यूज होता है, स्पॉट हेलिंग टूल. तो उसके लिए क्या करते हैं ना, आपकी जो चिक्स का एक साइड क्लियर होगा, सपोज राइट साइड क्लियर है, तो लेफ्ट साइड में भी वही कलर उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है. वो राइट साइड का कलर कॉपी करके लेफ्ट साइड में उसे अप्लाई किया जाता है. तो वो है ना वो है ना हेलिंग ब्रश टूल से किया जाता है. तो हेलिंग ब्रश टूल जब आप सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट यू विल गेट हियर इन अ मेन्यू बार, यू विल गेट हियर ऑप्शन फॉर ब्रश ट्रिकर, that what diameter, what size of brush you want for your healing brush tool, what hardness will be there, how much spacing will be there, and here you have to set an angle. It's not necessary that you have to select the angle always. You can keep it as it is. Now there are different mode. You want to replace, multiply a color, or you want darken area, you want lighten area. I will keep it normal. Then next one is a source. Source allows you to select the type of source to be taken either from sample pixel or from the image or some predefined pattern. So which type of source you want, you can select it from here. Is by default sample. And last one over here is a pattern, what pattern you want in your image. So it's available for spot healing tool. This option is not available for your healing brush tool. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप healing brush tool सिलेक्ट करोगे, you have to come on an image and you can see here there is a circle. You have to move your mouse as well as select your alt key. When you will select the alt key ना, you will see the changes कि सर्कल चेंज होके आपका सर्कल ना यहाँ पे देखिए लाइंस में आ जाता है. यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, सर्कल के अंदर 4 लाइंस है और लाइंस के अंदर एक और छोटा सर्कल है. सो इट चेंजेस इट शेप, और वो क्या करता है, अपने को सिलेक्शन में हेल्प करता है. यहाँ पे देखिए ये सिलेक्शन ही हो रहा है, मैं मूव कर रही हूँ माउस से और अल्ट की मैंने प्रेस करके रखी है, एज आई टोल्ड यू इन मॉर्निंग. अभी इसका मुझे क्या करना है, रेप्लिका क्रिएट करना है. तो मैंने इसे रिलीज कर दिया और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए इस साइड को मुझे इसका रेप्लिका क्रिएट करना है. तो यहाँ पे वो प्लस मूव हो रहा है और यहाँ पे ऐसा आई एम मूविंग ही उसका रेप्लिका क्रिएट हो रहा है. ये देखिए ये पोर्शन रेप्लिका उसका क्रिएट हो रहा है, उसकी स्टेम एंड एवरीथिंग उसका रेप्लिका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. So here the replica of the flower has been created. So in this way what you can do, you can use a spot healing tool. मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट यहाँ पे सर्कल था, अल्ट की प्रेस की, ये पोर्शन को सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद आई वेंट ऑन सम अदर पोर्शन, आई हैव रिलीज्ड माय अल्ट की, और मैं दूसरी जगह जाके जस्ट अपना माउस मूव कर रही हूँ. तो वहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रेप्लिका क्रिएट हो रहा है. देखो यहाँ पे इसका रेप्लिका क्रिएट हो रहा है. जितना आपने पोर्शन सिलेक्ट किया हुआ है उतने पोर्शन का वो आपको यहाँ पे रेप्लिका बताएगा. ओके, सो वी आर सिलेक्टेड द पोर्शन, उतने पोर्शन का आपको यहाँ पे उसने क्या किया, रेप्लिका क्रिएट करके दे दिया. यू कैन सी द चेंजेस ओवर हियर. नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वो पोर्शन सिलेक्ट किया था ना, तो नीचे का इरेज कर रहा है और ऊपर उसका रेप्लिका क्रिएट कर रहा है. सो सी, इतना हमने जितना पोर्शन सिलेक्ट किया था उतने पोर्शन का उसने क्या कर दिया, रेप्लिका क्रिएट कर दिया. सो इन दिस वे यू कैन यूज योर स्पॉट हीलिंग टूल.
Now the next type of tool over here, sorry, in this way we can use our healing brush tool. Okay, this one is a healing brush tool. Now next one is a spot healing tool. Spot healing tool मतलब क्या होता है ना कि सपोज देयर आर सम पिंपल्स और समथिंग ऑन योर फेस, पिंपल्स है या कुछ प्रॉब्लम है आपके चेहरे के ऊपर, तो आपको क्या करना है, उसे क्लियर करना है, फोटो में क्या करना है, क्लियर करना है। एट दैट टाइम दिस स्पॉट हेलिंग टूल इज यूज। उस वक्त हम कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, स्पॉट हेलिंग टूल। ओके, तो स्पॉट हेलिंग टूल आपको कहाँ मिलता है, हेलिंग टूल के अंदर ही स्पॉट हेलिंग टूल होता है, बट इट इज नॉट अवेलेबल विथ मी, मेरे पास नहीं है स्पॉट हेलिंग टूल। हेलिंग ब्रश टूल के अंदर ही स्पॉट हेलिंग टूल होता है। सेम वे व्हाट यू हैव टू डू, आपको स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल में भी आपको मेन्यू बार मिलेगा, सेम मेन्यू बार रहेगा। आप जस्ट उसके अंदर जब आप ऑप्शन बार में जाओगे, व्हेन यू विल गो इन ऑप्शन बार ओवर हियर, यू विल गो इन ऑप्शन बार, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, ब्रश के जब ऑप्शन बार में जाओगे तो वो आपको दो मोड पूछता है, दैट इज प्रॉक्सिमिटी मैच एंड क्रिएट टेक्सचर। सो व्हाट दैट गिव्स, okay, so proximity match allows to select the pixels around the edges of the selected area and use it as a patch for repairing the selected area। जो सिलेक्टेड एरिया जिसे आपको रिपेयर करना है उसको सिलेक्शन के लिए हेल्प करता है। और क्रिएट टेक्सचर मतलब क्या, यूजिंग ऑल द पिक्सल इन द सिलेक्शन फॉर फिनिशिंग द एरिया। आपको अगर फिनिशिंग देना है एरिया को, जैसे इसको फिनिशिंग देना है, उस वक्त हम क्रिएट टेक्सचर ऑप्शन यूज करते हैं। बट दिस ऑप्शन, एज आई टोल्ड यू, दैट स्पॉट हेलिंग टूल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन माई लैपटॉप, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन यू दैट थिंग। ओके, सो now I have done Control Z over here. Now but the spot healing tool is used in the same way for repairing your image. Okay, healing brush tool create the replica of the image, and spot healing tool is used for clearing the spot of the on the image if they are available over there, like on our skin when we when the photo is clicked, if there are any spot on our skin, for that, for removing those spot, this spot healing brush tool is used. Now नेक्स्ट वन इज क्लोन स्टैम्प टूल। नेक्स्ट वन इज क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल मतलब इमेज जो है आपका, एक इमेज का एक पर्टिकुलर पोर्शन है, उसका कॉपी क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ क्लोन स्टैम्प टूल। हम किसका यूज करते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल। सो बिलो हेलिंग ब्रश टूल हमारे पास कौन सा टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल। वी आर हैविंग clone stamp tool। Okay, when you click on clone stamp tool, here you will get to see that there are number of options like mode, opacity, flow। I told you what is mode, opacity, flow। Okay, so यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन बार में से आपको जो मोड चाहिए, यू हैव टू सिलेक्ट दैट मोड। आई एम गोइंग टू keep it as it is, normal, opacity to 100, flow will be 100%, align, okay, I am keeping it align, and use all layers। तो मुझे क्या करना है, ये जो है ना, ये इमेज जो है, इसका मुझे क्या करना है, क्लोन क्रिएट करना है। क्या करना है, क्लोन क्रिएट करना है। क्लोन मतलब ये कंप्लीट पोर्शन का क्लोन क्रिएट करना है। तो कैसे कर सकती हूँ, सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑप्शन बार में से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना, अब इसका क्लोन क्रिएट करना है। तो आपको याद है हमने अभी हेलिंग ब्रश टूल में अल्ट की प्रेस की तो सर्कल चेंज, सिलेक्शन के लिए सर्कल चेंज होके अलग फॉर्म में आ गया था। सेम वे आपको क्या करना है, अगर आपको किसी चीज का रेप्लिका क्रिएट करना है तो क्या करो, सॉरी क्लोन क्रिएट करना है तो क्या करो, ये अल्ट की प्रेस करना है। विद द हेल्प ऑफ माउस यू हैव टू प्रेस अल्ट की। स्टैम्प टूल सिलेक्ट कर लिया है, अल्ट की को प्रेस करो। क्या करो, अल्ट की को प्रेस करो। अल्ट की को प्रेस करने के बाद क्लिक ऑन द एरिया ऑफ इमेज यू वांट टू बी क्लोन एंड रिलीज द अल्ट की। अभी मुझे इसका क्लोन क्रिएट करना है, ये जो इमेज है ना, इसका मुझे क्लोन क्रिएट करना है। आई वांट टू क्रिएट क्लोन ऑफ दिस इमेज। तो मैं इसके ऊपर माउस मूव कर रही हूँ। नाउ आई एम रिलीजिंग इट, आई हैव रिलीज इट। नाउ वेयर एवर आई वांट टू क्रिएट द क्लोन ऑफ दिस इमेज, उस एरिया पे मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है। And just I have to move my mouse, I have to move my mouse by clicking left button। लेफ्ट बटन को क्लिक करके मुझे ये एरिया में क्लोन क्रिएट करना है। मैं जस्ट अपना माउस मूव किया, यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, अपना माउस मूव कर रही हूँ। आई एम जस्ट मूविंग माई माउस ओवर हियर, सी, और इसका द क्लोन इज गेटिंग अपीयर्ड ओवर हियर, क्लोन इसका क्रिएट हो रहा है।
So there is no much difference in healing brush tool and clone tool. Both near about both are the same. Near about both are the same. Okay. So here the exact clone has been created of this image. The exact clone has been created of this image. ओके तो इस इमेज का क्या हो गया है, यहाँ पे क्लोन क्रिएट हो गया है. हाँ, सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ क्लोन ऑफ योर इमेज. नाउ next point from here is pattern stamp tool. Next point from here is I will do control Z over here and I will, okay, so just control Z. Now what I want to do, I want to use the next type of tool, that is pattern stamp tool. Now for what pattern stamp tool is used? Pattern stamp tools now allows you to fill the desired area of an image with a predefined pattern or a new pattern that you create. नए पैटर्न से आपको नए पैटर्न यूज करने में, नए पैटर्न से आपको आपकी इमेज को फिल करने में पैटर्न स्टैम्प टूल हेल्प करता है. कैसे करता है? So from where you can select a pattern stamp tool. Okay, just in a stamp tool, right click over here, select a pattern stamp tool. After selecting a pattern stamp tool, here in menu bar you can see all the options that were available in stamp tool are available in pattern stamp tool as well. Just there is one more option available over here, that is pattern. So here when you click on a pattern, here on arrow you will find different patterns. So whichever pattern you want for your image, like for this flower I want this pattern. So see, I am filling my flower with this pattern. पूरा ये image इस pattern से मैं fill कर रही हूँ. Okay, so in this way you can change the pattern of your image. In this way you can change the pattern of your image. Like I want this one, so I want this area. Okay, तो मैं इसका pattern change कर रही हूँ. I am changing the pattern over here. So in this way you can use a pattern stamp tool. Pattern stamp tool आप इस तरह use कर सकते हो. You can change the pattern of your image by using a pattern stamp tool, and you can select different patterns by going in a menu bar of pattern stamp tool. Okay, now I will close this image and I will take another image over here. Okay, and open. Okay, now the next type of tool over here is eraser tool. अगर मुझे कुछ erase करना है, तो जैसे आपके there is a eraser tool in your MS Paint, same way there is an eraser tool in your Photoshop as well. So where is this eraser tool? Below this clone stamp tool or pattern stamp tool there is a eraser tool. See, this one is a eraser tool. What size you want of eraser you can select by going in this brush menu bar, brush picker, whatever size you want you select. Mode, which mode you want it in the form of pencil, or in which mode you want, you can select it. Okay, opacity and all the options are available. Now what happens with a brush tool? On whichever area you go and you move your mouse, when you select a brush tool, that the portion get erased. That portion get erased. Here you can see that leaves are there and they are getting erased as I am moving my mouse over here. Okay, so in this way the eraser tool works. Now just I am doing Ctrl Z. The next type of tool is a blur tool. अगर आपको आपकी इमेज को blur करना है तो हम कौन सा tool यूज करेंगे? Blur tool. So where the blur tool is available? Now see, below the eraser tool there is a option of a blur tool. कौन सा option है? Blur tool. क्या करना है? ये blur tool पे जब click करोगे, you have to click on a blur tool. After that select a blur tool. Blur tool को select करने के बाद क्या करना है? whichever image you want to make a blur, whichever image you want to blur, आपको क्या करना है? आपको blur करना है. You want larger size, just from here you can take a larger size. और आपको जो भी image को blur करना है, you have to go on that image, or you have to go on the image on that portion which you want to blur. मुझे suppose क्या करना है? ये जो portion है, ये वाला जो portion है, I want to blur this. So what I will do, with the help of my left mouse button, I will just move my mouse over here. And I am just moving my mouse, left mouse button. I have hold my left mouse button and just मैं इसके ऊपर मूव कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस कि ये लिटिल बिट ब्लर हो रहा है. लिटिल बिट नहीं, इट्स गेटिंग ब्लर. ओके, तो ये क्या हो रहा है? ब्लर हो रहा है.
मैं जैसे जैसे मूव कर रही हूँ इज गेटिंग ब्लर, आपको चेंजेस समझ में आ रहे होंगे। और ऑन लीफ आई विल डू, ये लीफ है इसके ऊपर मैं मूव कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो द इच शेडिंग इज गेटिंग चेंज, वो आपको लाइट 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 दिखते जा रहा है। ओके, सो इज गेटिंग ब्लड, वो कौन सा कैसा हो रहा है, ब्लर। आपको दूसरी इमेज पे बताती हूँ। ओके, सो दिस वन इज द इमेज, नाउ वी विल ब्लर दिस इमेज। तो ये इमेज है, इसको ब्लर, वी विल ब्लर दिस इमेज। तो हियर यू कैन सी द चेंजेस, जैसे मैं ब्लर करी हूँ इसका एरिया लाइटन लाइटन होते जा रहा है। Okay, so in this way you can blur your image, in this way you can blur your image in your Photoshop. Just you have to move your mouse, you have to hold your left mouse and you have to blur the image. Blur means you have to lighten it. Okay, used to soften or blur the select area, you can use this blur tool from the Photoshop. Now next one is a smudge tool. Next tool कौन सा है, smudge tool. So where you will get this smudge tool, तो ये blur tool के अंदर ही ना आपको smudge tool का ऑप्शन मिलता है। अब ये smudge tool क्यों यूज होता है, smudge tools allows you to create an effect of smudging wet paint with a finger on the image. आपको अगर दो कलर को मिक्स करना है, स्मज करना है, मतलब साथ में लेके आना है, तब हम स्मज टूल का यूज करते हैं। So select the we will select the smudge tool. After selecting the smudge tool, I have right clicked over here, I have selected a smudge tool and I will select larger size. Okay, and I select a larger size. Now I want to smudge this image, smudge करना है image को। तो ये देखिए, this in this way I am smudge. So this is the way in which you can smudge the image. Okay, this one is the way in which you can smudge the image. Okay, this is not a blur image, this one is just smudge image. Okay, so in this way you can smudge your image by using a smudge tool. Now I have just done a Ctrl Z. Now next type of retouching tool is a dodge tool. As I told you in morning that the dodge tool is used to lighten the pixel. Dodge tool is used to lighten the pixel. So let's take a rose image that we have taken because it is a darker one. Okay, so I have taken a rose image. I will close this one. Okay, now this one is a rose image. Okay, now what I want to do, I want to apply a dodge, means I want to lighten the pixel. With the help of dodge tool you can lighten the pixel of your image. Now these are the darker pixel, I want to lighten them. So from where I will get this dodge tool, so here you can here just in this in near here, see there is a near a smudge tool, or in a dodge, near dodge tool at the right there is a tool. Okay, there is a burn tool. In burn tool there is a dodge tool. Select the dodge tool, it is like a magnifying glass. Select the smudge tool, select the size of smudge tool, and here if you want to lighten the pixel, here you can see as I am moving over here, the pixels are getting lighter, means the image is getting lighter means the pixels are getting lighter. So in this way you can dodge your, you can use a dodge tool and you can lighten the pixel of your image, Okay, now so in this way you can use this dodge tool. Now next type of tool that we are going to use over here is a burn tool. कौन सा tool है, burn tool. Okay, blur tool I have showed you कि blur कैसे करना है image को. I think so I have showed you blur tool. Yes, I have shown you the blur tool. Now let's see the burn tool. Burn tool, for what the burn tool is used? It is used to darken the desired area of an image. Suppose you want to darken this area of an image. Okay, at that time we use a burn tool. So where we will get the burn tool? In this dodge tool we will get the burn tool. This one is a burn tool. Select the burn tool and whichever area you want to make it darken, you can do it by using a burn tool. You can see that the area is getting darker and darker. As I am moving, the area of the image is getting darker and darker होते जा रहा है. तो आप देख सकते हो रोज पहले लाइट था, अब कितना डार्क हो गया है करके. Like I want to darken this. So see, this leaf has been getting darkened. See, this area has been darkened. So in this way you can use a burn tool in from Photoshop. Okay, so guys, here we have completed our chapter number 7,
and I have showcased you that how to use each and every tool. We have discussed them in classroom as well, and we are going to discuss them in classroom again. बट आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रॉपरली सी दिस वीडियो. बोर हो रहा है वगैरह मैं सब समझ सकती हूँ, बट मेरी भी मेहनत इसके पीछे होती है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए. So guys, as I told you, here we have finished this chapter. So thank you guys and carefully watch the video.